স্পেশাল ট্রেন না চেয়ে কেন নাটক করছেন সোনিয়া? হাত জোর করে আর্জি নির্মলার। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं। क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। সংস্কারমুখী পদক্ষেপে কোম্পানি আইনে বড়সড় সংশোধন আনলো কেন্দ্র। ছোটখাটো ত্রুটি আর অপরাধ বলে গণ্য হবে না। কথায় কথায় আদালতে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। সালিসির মাধ্যমে সমস্যা মেটানো যাবে। দেউলিয়া বিধিরও পরিবর্তন আনছে কেন্দ্র। Debts related to COVID shall be excluded from default under the IBC. This is a change which we are going to make, that any debt which is incurred or indebted situation that comes up for companies because of coronavirus, they shall not be included in the category of default. So no fresh insolvency proceedings will be initiated up to 1 year. One other thing which will benefit the MSMEs is the minimum threshold to initiate insolvency proceedings is now raised to 1 crore from 1 lakh. করোনা প্যাকেজের পঞ্চম দফা। নির্মলার নজরে ফের পরিযায়ীরা। লকডাউনে ঘরে ফেরা শ্রমিকদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত। বাড়তি অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্রের। মনরেগায় অতিরিক্ত 40,000 কোটি টাকা ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। A lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore of rupees is additionally given over and above the BE. বাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্যের দাবি মেনে ঋণের ঊর্ধ্বসীমা 3 থেকে 5% করতে রাজি হলো কেন্দ্র। তবে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সংস্কারের শর্ত। Increased the borrowing limit for the states from 3 to 5. From 3 to 3.5, the additional, that 0.5% is unconditional. After that, up to 4.5, that 1% increase will be released in 4 tranches, and each one of those tranches will be linked to reforms which have to be taken with specified, measurable, feasible action. The next one, which is another 0.5, because I would have touched 4.5 with that, the last 0.5 will be given as soon as the milestones are achieved, not in all the 4, but at least in 3 of these conditions. So if you're talking of one nation, one ration card, ease of doing business, power distribution related matters, urban local bodies matter, there are 4. From among the 4, if at least 3 are completed, the last 0.5% will be released.